Assalamu alaikum everyone. This is Arsalan, your functional English teacher, and I hope that you are doing well and hope the things are in your better shape. If you remember that we have recently talked about in the last lecture, I talked about how to develop your writing skills, and I related it with paragraph writing, and then I moved on to essay writing. And if you remember that we discussed the structure, the basic structure of essays, and I told you that even on the screen, you can have the basic structure of an essay. It could be any essay, like introduction, body, and conclusion. And body, since you are an academic student doing part of the undergraduate studies, so I chose to inculcate three paragraphs. So every paragraph is a topic sentence, supportive ideas. The paragraph is mainly linked with the thesis, which is the part of an introduction, and then finally we had the conclusion. If you can have this shared, I hope that the screen is shared with you, and I want to go ahead. So here we go. Uh, this is something that I want you to have a look at. I want to see. Yes. Uh, since today the topic we have is divided into two parts. The first 20 minutes will be related to the techniques of writing an essay, and the second 20 minutes will be about types of essay and which types are relevant to you as a part of financial studies and commercial studies. So we have here coherence. The most important part of any essay is the coherence, means the link of ideas, and how ideas are connected with each other and how they move on. If you could look at my hand, so it's like the finger and the space between the fingers, and then it's like this. Okay, so and if I remember that one of my teacher used to tell me that this is called the academic writing paragraph theory. The introduction, the thumb, the three fingers are the main body fingers, describing their own ideas, and each finger has this small box of three boxes. So it means that topic, sentence, supportive ideas, and conclusive statement. And this is very small finger, that's conclusion. Okay, conclusion is always smaller than the body paragraphs and the introductory paragraph. Here we go. What is coherence? Coherence means achieving connectivity, relevance in ideas, and the arguments that we draw while writing any essay. In the first part, we can see that relevant criticism or counter criticism means ideas, arguments, and counter arguments. So it should be relevant. I remember, if you remember, or you recall your memory or connected with the previous lecture that I talked about brainstorming, prioritizing ideas, relating ideas, the paragraph should be self-contained. One paragraph deals with one idea. One paragraph counters one complete thought. So it should not be muddled or mixed with them. Secondly, essay. The essay should not give a examiner or the reader indigestion. It means that something you're writing is not acceptable. Okay, if it is not humanly acceptable or logically acceptable, so obviously you will suffer. Then we have here a very important thing. Each paragraph should have a link with the reference to the topic. You can see that thesis is something that has the string of all paragraph. That should have direct strings of all paragraph. It's very hot in here and humid, so you have to keep drinking water while you're talking. So we have here conclusion should never introduce a new material. Conclusion is basically a restatement of your idea. It's a restatement of your idea. So you can have the real discussion with conclusion, linking with its introduction. Here we are.
I hope that this is the technical aspect that you must have got. Now, how to create an introduction? Uh, how to create an introduction? I would appreciate if the host can let me look at the comments if my students have joined me. I would like to see their comments in between my conversation. In this way, I should be able to answer you on the spot, and your queries should be answered. So, okay. So, what happens that these kinds of techniques can help you write essay in a smoother way and in more confident way. Now, when you become a writer or when you attempt to write an essay means an attempt towards something. And since it's more academic, so it has to be uh, something like an academic attempt or the try. So a lot of students ask me that, sir, how to start an introduction? Remember one thing, there is a traditional or conventional attitude for introduction that you can always have a look at, and which is easier if you practice. It's called funnel introduction. अगर आप funnel को देखें ना, funnel कुछ इस तरह होती है. तो पहले बड़ा it's larger, uh, round, and then it goes on to thicken things, and then वो thick होके वो उस particular जो pipe होता है उसमें से गुजरता है, and then it spreads again. तो इंट्रोडक्शन भी कुछ फनल की टाइप होती है. अब फनल की टाइप किस तरह होती है कि देखें, व्हाट यू हैव टू डू, आई एम गोइंग टू टेल यू इन उर्दू एज वेल फॉर माय स्टूडेंट्स हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली से. आपने सबसे पहले ब्रॉड आइडिया लेना है. ब्रॉड आइडिया ये देखें, एक टॉपिक है आपका. लेट मी गिव यू अ टॉपिक, आप इसे और सुनिएगा कि nowadays marketing techniques, particularly online marketing techniques, have helped even common people to grow their business. To what extent do you agree or disagree? ये क्वेश्चन है भाई. आपने आपसे पूछा गया कि आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं मुत्तफिक हैं स्टेटमेंट से. सही है. अग्री डिसएग्री का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है. इट मींस दैट कि आप इससे कितने मुत्तफिक हैं, इस बात से कितने मुत्तफिक. तो बात क्या है? व्हाट इज द इशू? द इशू इज that online marketing techniques, online marketing strategies have helped common people to grow their business easily, and with much more with much more ease. तो ये टॉपिक है. अब सबसे पहले तो देखें, आपने ये देखना है कि आप किस साइड पर हैं. आप अग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, या आप पार्शल रहना चाहेंगे. वैसे तो अग्री और डिसएग्री के अंदर जो बेस्ट चीज ये होती है कि आप वन साइडेड हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इससे आर्गुमेंट स्ट्रेंथ शो होती है. सॉरी, ओके. आर्गुमेंट स्ट्रांग होती है. तो आर्गुमेंट स्ट्रांग होती हैं, एंड देन आप आराम से जो है इसको रिलेट कर सकते हैं. देखिए, नेचुरली क्या होता है कि आप वन साइडेड अगर होते हैं तो आप फिर देन यू हैव अ लुक एट the number of ideas that you can bring. मैंने कहा मैं agree करता हूँ. I agree to the fact that yes, these online marketing techniques and strategies and even opportunities have helped people to grow their business. अब तीन चीजें लिखनी है मुझे. सही है, थ्री थिंग्स. अपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. सबसे पहले तो मुझे कोर ढूंढना है कि मेरे ऐसे का कोर क्या है. तो अगर आप नोटिस करें तो ऐसे का कोर है मार्केटिंग और पर्टिकुलरली ऑनलाइन मार्केटिंग. फिर मुझे ढूंढना है डिबेट क्या है, यानी क्वेश्चन क्या है. एंड देन आई हैव टू कम टू माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू दैट मैं इस ऐसे को कहाँ लेके जाऊंगा. क्योंकि जो इंट्रोडक्शन की जो आखिरी लाइन होती है या आखिरी सेंटेंस होता है जो कि थीसिस स्टेटमेंट होता है, समझ लें कि वो महल का दरवाजा है. वो आपको गाइड करेगा कि आपने किस तरफ जाना है. तो गेटवे कहलाता है वो.
तो पहले मैंने जर्नल सेंटेंस लिख दिया या कोई कोटे। अच्छा, जर्नल सेंटेंस लिखने के लिए आप जर्नलाइज व्यू लिख सकते हैं, आप ओवर सिंप्लीफाइड व्यू लिख सकते हैं, आप पब्लिक ओपिनियन लिख सकते हैं, आप कोटेशन लिख सकते हैं, आप सेइंग लिख सकते हैं, आप डायलॉग से शुरू कर सकते हैं। तो उसमें कोई मसला नहीं है। आपने अब जैसे मैं इस तरह शुरू कर सकता हूँ, मैंने कहा कि एज फार एज this smartphone world and internet and social media world is concerned, the best thing about this is that it has encouraged a common man to grab more audience to reach more people. तो आ गया ना, ग्रैबिंग मोर ऑडियंस मोर पीपल, टेक्निकलिटीज का जिक्र आ गया। तो ये जर्नल व्यू हो गया। अभी तक ये नहीं पता कि डिबेट क्या है। मैंने कहा therefore it is often debated that whether these online marketing on Instagram, Facebook, Twitter, Google search have helped common people or not. So the answer is a big yes. अब पता चल गया कि भाई मैं अग्री कर रहा हूँ, सही है, डिबेट भी और मैं इससे एग्री कर रहा हूँ। अब मैं आगे थीसिस डेवलप करूंगा। मैं थीसिस किस तरह डेवलप करूंगा? नंबर वन, मैं थीसिस बहुत क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि वो आपके टॉपिक की फेस है। दिस इज द फेस ऑफ योर टॉपिक, सो इट हैज टू बी वेरी मच विविड, क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्सप्लिसिट, क्लियरली बात करनी चाहिए उससे, सही है, एंड टू डायरेक्ट होना चाहिए। तो मैंने कहा, वेल पर्सनली आई बिलीव दैट देयर आर थ्री मेजर रीजंस फॉर व्हिच online marketing techniques seem to be more feasible than ever for a common man or an entrepreneur or uh, for a startup. For a startup, sorry, and startup. Number one, number one नहीं लिखूंगा मैं उधर, मैं बोलूँगा कि well, firstly, it is cheaper. Secondly, it is easily accessible. Thirdly, it is less, technique oriented or more user friendly. अब तीन चीजों ने ऑनलाइन मार्केटिंग को आम आदमी के लिए फिजिबल बनाया। नंबर वन, कि उसको पैसे नहीं पे करने पड़ते। नंबर टू, मेरे पास रीजन है कि ये जो है एक्सेसिबल है, हर कोई से एक्सेस कर सकता है। नंबर थ्री, उसके लिए कोई खास एजुकेशन डिप्लोमा और आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। हर बच्चा बच्चा जो है वो इंस्टाग्राम ये सब चीजें चला रहा है। तो ये चीज आप ये तीन पॉइंट लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे आने वाले जो तीन पैराग्राफ होंगे बॉडी के अंदर, जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, इट शुड बी आंसरिंग व्हाई एंड हाउ ऑनलाइन मार्केटिंग इज चीप। कैसे, क्या मतलब है चीप का? यहाँ पे चीप का मतलब क्वालिटी में कम है, चीप का मतलब अफोर्डेबिलिटी है, क्या है? तो मैं फिर उसको डिफाइन करूंगा, विद एग्जांपल डिफाइन कर दूंगा। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं आई एम अ टीचर एज वेल एज एन एंटरप्रेन्योर। आई स्टार्टेड अप फेसबुक मार्केटिंग, मेरा अपना फेसबुक चैनल है, या सॉरी फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, where I can reach my audience, where I can reach my relevant audience, and they often contact me and they give me business on IELTS, TOEFL, writing skills classes and English language classes. तो मैंने अपनी पर्सनल एग्जांपल दी थी। देखें, आप दो तरह की एग्जांपल दे सकते हैं, पर्सनल एंड ग्लोबल। आप ग्लोबल भी दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भाई वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स दैट आई कैन एवर कम अक्रॉस इज फूड पांडा एंड ज़ोमैटो, that these were the global brands which did not do the traditional marketing. They relied more on uh, kind of a market uh, that Walaikum Assalam. Beta, I just saw the comments, so Walaikum Assalam. Okay, so what happens that uh, there are two kinds of examples. So I read my example in this first paragraph. फिर मैं सेकंड पैराग्राफ पे आया, मैंने सेकंड पैराग्राफ शुरू किया मोर ओवर। मैंने कहा मोर ओवर द ईज ऑफ रीचिंग दीज टेक्नोलॉजी, the ease of reaching and accessibility. Even a small smartphone costing 8,000 rupees can get you all the apps, or a small laptop or a computer that can range from 5,000, 3,000 to 5,000 rupees in a computer with a Wi-Fi connection or net connection or data connection can help you be the part of this world. And similarly, a lot of people, even people sitting in the smaller areas or underprivileged areas, like some areas, like the small towns, like the inaccessible towns or remote towns, the people are doing their business, they are online, they are in connection. Let me give you an example. A family in a smaller area of Karachi, which is called New Karachi, they are doing their online business and selling their home cooked food
अंडर दिस लॉकडाउन। तो एक और एग्जांपल आ गई फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। थर्ड पे मैं आया, मैंने कहा कि भाई ऑनलाइन टेक्निक्स जो होती हैं वो यूजर फ्रेंडली होती है। सबसे अच्छी बात क्या होती है ऑनलाइन टेक्निक्स? दे आर यूजर फ्रेंडली, एंड सिंस दे आर यूजर फ्रेंडली, so what happens? Okay, since they are user friendly, so what happens that anybody can access. Even I can tell you that people who have not ever been to schools, colleges, they can access. Like I still remember that watching a documentary on BBC where I found out that they conducted a survey in Ghana, which is in East Africa, and people who have never seen the village, they live in villages, have never seen schools and education. They were easily able to access their cell phones, control their applications, use their apps effectively, efficiently, and reaching the people. So you don't have to be worried about it, and you don't have to go for the training. And even online आपको जो है वो you are accessible to YouTube videos that can train you to be the part of this community, and you can grow your business. Similarly, the smaller startups don't have to worry about their marketing money. However, sometimes there are options of boosting the post or promoting the post which needs money, but I feel that it is still accessible and it is still viable for any startup. अब देखिए ये तीन पैराग्राफ मैंने जो ओरली बोले हैं, तीनों आइडियाज को अलग अलग पैराग्राफ में डिफाइन किया। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा मैंने मोर ओवर, तीसरा पैराग्राफ को मैंने अबव ऑल या फाइनली करके या इन एडिशन टू दैट। अब मैं जो ऐसे का फिफ्थ पैराग्राफ में आऊंगा जो कि कंक्लूजन है, यानी इंट्रोडक्शन, introduction, sorry, introduction, body one, two, three, and now we are going to the conclusion. So this is the
मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा ना. Yes, so we were actually we had a little disruption. So we'll move on from where we left. So I was talking about conclusion. So introduction, body paragraph, and then conclusion. In conclusion, we do not introduce a new idea. We do not give reasons. Rather, we go for the restatement of our thesis. So how would you write a conclusion? You can use any phrase that can help you introduce a conclusive idea. One of the most common phrases in conclusion. Uh, Another phrase is to sum up, to make it short, in short, in sum. These uh, are the phrases. My favorite one is in the final analysis. So I would say that in the final analysis, uh, I would recommend that online techniques and online marketing techniques, online marketing strategies have always been helpful and will continue to be helpful in future. And I hope that more and more people should avail it, particularly in the case of startups and entrepreneurship, where we do not have a lot of capital or we do not have sufficient capital to make a good use of it. So therefore, it's important for anybody to be aware of these things. अच्छा, अब इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ये तो टेक्निक्स की बात हुई. अब हमने देखना ये है कि टेक्निक्स के साथ साथ व्हाट डू वी हैव टू डू, कि हमें जब लिखना होता है तो हमें किस तरह लिखना है, हाउ डू वी गो अबाउट इट. और राइटिंग के अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. देखिए 5 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि कलेक्टिवली अगर आप देखें सबके पास में. नंबर 1, number 1, we have a problem of bringing ideas. Solution, brainstorm. Number 2, relevant ideas or connectivity among ideas. Solution, quite easy, prioritizing your ideas. Prioritize your ideas and work out. Number 3, grammar errors. Grammar errors will always be there. Do not put yourself off. There is nothing called perfection. ये परफेक्शन और परफेक्ट वाला बबल जो अपने आप से खत्म कर देंगे. मैं लिखूंगा तो अच्छा लिखूंगा. A lot of students feel insulting when they are being corrected by teachers. मैंने क्लास में भी ऑब्जर्व किया है, मैंने क्लास में ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बुरा लग जाते हैं टीचर अगर सही कर रहा होता है. अरे भाई, आप पढ़ने आए हैं, अगर आपको आता होता तो आप उस क्लास में नहीं बैठे होते या आप अभी लाइव सेशंस नहीं ले रहे होते. तो अपनी मिस्टेक्स को आप एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के साथ साथ उनको रेक्टिफाई करें. एंड यू शुड बी थैंकफुल टू द पीपल हु हेल्प यू रेक्टिफाई दैट. Use a mistake. If you make a mistake, you do not grow, short. You do not grow small. You actually come out of your shell, and you are able to identify and rectify yourself. आगे आते हैं वोकैबुलरी का इशू. देखिए वोकैबुलरी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो हमारे बच्चों को हमेशा रहेगा. उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो टारगेट ऑफ स्टडीज होता है क्लासेस के अंदर, पर्टिकुलरली मैं स्टूडेंट को भी थोड़ा सा कसूरवार ठहराऊंगा. आई वुड ब्लेम स्टूडेंट्स. नॉट मैनी स्टूडेंट्स रीड बुक्स. चले बुक्स छोड़ते हैं, ब्लॉग्स ही नहीं पढ़ते, हेडिंग पढ़ के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं. कितने नॉवेल्स, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज आपने पढ़ी हैं, सुनी हैं. तो अगर आपने अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है तो आपने बुक्स पढ़नी होंगी, जर्नल किताबें पढ़नी होंगी जो आपको करें, सब्जेक्ट बुक्स नहीं, जर्नल. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो है आप एक और काम कर सकते हैं कि what do we have to do? What we have to do is we need to find out one thing, that we have to be confident enough
that whatever we are writing is actually reflecting our thoughts or not. For that, we need to read, we need to write, and we need to help other or present our writing before many people. इसका पहला स्टेप ये होता है कि आप जब भी लिखें तो अपने पेयर से अपने क्लास वालों से ना छुपाएं, उसको पढ़ने दें, उसको पढ़ने दें, चाहे वो आपकी मजाक उड़ाए कुछ भी करे, उसको पढ़ने दें, सही है। और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको बेहतर आइडियाज देगा या आपकी वो चीज पॉइंट आउट करेगा जो कि ज्यादा आपके काम में आएगी। इज इट क्लियर? बिफोर इट गोज टू टीचर। तो एक तो हो गई पेयर करेक्शन, एक सेल्फ करेक्शन भी होगी कि आपने खुद दोबारा पढ़ना शुरू किया, देन यू एडिटेड, you came up with more ideas, you came up with better ideas, more relevant ideas, and then you inculcated those ideas. Similarly, you thought that yeah, this seems to be not a perfect sentence. I don't want to add it. You remove it and you change it. तीसरी बात ये है कि भाई आप अपने अल्लामा ना बने। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि व्हाट दे डू, और खासतौर पर इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से वो क्या करते हैं, अलग अलग वीडियोस देख लेते हैं। अब क्लास में जो टीचर खड़ा हुआ है जो कि वाकई सब्जेक्ट एक्सपर्ट है और जो आपके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, वो आपको कोई चीज बता रहा है तो आप उसे ओवरलुक करें या जंप करके आप आगे की बात बताने की कोशिश करते हैं। Either you want to impress the teacher or you want to impress the class fellows or you want to be highlighted. It is the problem of this age. I do understand that. But the problem is that the biggest problem is with you that it will halt your learning. वो आपकी लर्निंग खत्म कर देगा। ओके, तो आपने इस पे ज्यादा जो है वो फोकस करना है कि आप अपने टीचर की बात सुने, कोई भी टीचर हो उसकी बात सुने, उसको लॉजिकली कंक्लूड करें। डू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन जरूर करें। अगर आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन आता है, नॉलेज सीकिंग क्वेश्चंस करें आप, दे आर इम्पोर्टेंट। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है जो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक का सेकंड पार्ट है, वो है टाइप्स ऑफ एसेज। ठीक है, ऐसे राइटिंग की बेसिक 4 टाइप्स है। अगर आप बेसिक टाइप्स पे जाएंगे, there are only 4 types. Number 1, descriptive essays. Number 2, persuasive and argumentative essay. Number 3, expository essays. And number 4, आपके जो है वो process यानी sort of critical और analytical essays आ गए। ये बेसिक टाइप्स होते हैं। अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स के, फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए, या बेस अकाउंटिंग फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए, या बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए कौन से ऐसे सबसे ज्यादा रेलेवेंट होते हैं? What are the which essays you think you should always be focusing? Then सब टाइप्स में तो बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं जो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको you should have a grip on every essay। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एसेज करेंगे तो आप केस स्टडीज लिख सकते हैं। अगर आप परसुएसिव एसेज लिखेंगे तो आप सॉल्यूशंस और प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। अगर आप नैरेटिव एसेज लिखेंगे तो आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, जो कि आपकी ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल फील्ड। और सबसे अहम है एनालिटिकल एसेज या एक्सपोजिटोरी एसेज। तो देखिए, एक्सपोजिटोरी एंड एनालिटिकल एसेज वो एसेज होते हैं जो कि रिपोर्ट करने में, जो कि डाटा बिजनेस केस स्टडीज को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। तो ये एसेज चारों आपके रेलेवेंटली प्रैक्टिकली आपके काम में है। क्योंकि I have faced this question many times in my class, and as a student, I had this question on my mind when I was studying in school. That why should we study this? What is the practical usage of essay writing? Sometimes I was given the answer, sometimes I was not, and then I came to realize that yes, everything has a particular use, and it comes when you join the field. जब आप फील्ड ज्वाइन करते हैं तभी आता है। तो सबसे अहम इसके अंदर यही हो जाता है कि भाई आप क्योंकि बिजनेस स्टूडेंट हैं तो आपने केस स्टडीज पढ़नी भी होती हैं, लिखनी भी होती हैं, और उसको सॉल्व भी करना होता है। तो आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे और एनालिटिकल ऐसे उसमें काम आ जाता है। Since you have to develop reports, you have to interpret data, you have to do the comparative analysis, तो expository essays आपके काम में आ जाते हैं, या उसके सब essays काम में आते हैं। सेकेंडली आपके पास फाइनली आपके पास आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती है, आपको बिजनेस presentations देनी होती है। You have to be a persuasive speaker, you have to be the speaker who can present arguments, who can convince the audience, who can convince the business people ideas. तो persuasive essays में काम आता है। Every essay is useful.
So here we go. We are going to have a quick look at the types of essays. देखिए कॉमन टाइप्स ये लिखी हुई हैं आपके पास. You can see that on the screen now. पहला है आर्गुमेंटेटिव ऐसे. आर्गुमेंटेटिव जो होता है वो बेसिकली इक्वल एनालिसिस होता है किसी भी ऐसे का, जिसमें आप फॉर एंड अगेंस्ट दोनों आर्गुमेंट को बिल्ड करके and then you come to the point that which argument is heavier and then you put it in a conclusion. Persuasive essay वो होता है जो agree disagree का आपने एग्जांपल दी. In persuasive essay you have to convince the reader, you have to make them uh, you know you have to make them agree with what you are trying to say. उसके बाद है आपके पास then you have narrative essay, writing about history, description, incidents. आपकी जितनी रिपोर्ट राइटिंग होती है वो नैरेटिव होती है. You have to look at the past, you have to look at how things happened. नैरेटिव में फिर दो तीन टाइप्स पड़ रहा है. फिर है कंपेयर एंड कंट्रास्ट. ये कंपैरेटिव एनालिसिस ऐसे कहलाते हैं, एनालिटिकल ऐसे कहलाते हैं. इसमें आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं या कंट्रास्ट करते हैं या कंपैरेटिव डिस्कशंस करते हैं, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज की डिस्कशन होती है, जैसे कि हाउस वर्सेस अपार्टमेंट की डिस्कशन होती है, बिजनेस वर्सेस जॉब की डिस्कशन होती है. फिर आता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे. डिस्क्रिप्टिव ऐसे मींस पेंट द पिक्चर इन वर्ड्स. आप कोई चीज है आपने देखी, आपने उसको लिखना है. कोई सिनेरियो आपने देखा, आपने अपनी लाइफ के बारे में लिखना है, आपने अपने स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में लिखना है, आपने किसी बिजनेस मॉडल के बारे में उसको मॉडल डिफाइन करना है. उसके बाद आता है कॉज एंड इफेक्ट्स. कॉज एंड इफेक्ट्स इज प्योरली प्रॉब्लम सॉल्यूशन और एनालिटिकल ऐसे होता है. केस स्टडीज आप समझ सकते हैं इसमें, केस स्टडीज आप. फिर एक्सपोजिटोरी इटसेल्फ, फैक्ट्स एंड ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी. एक्सपोजिटोरी का मतलब ये होता है कि टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड ट्रूथ. इसमें एक और चीज ऐड कर लें आप. इसमें एक चीज आ जाती है, आपने देखा होगा कि आपको ग्राफ्स मिलते हैं इकोनॉमिक्स में, आपने उसे डिस्क्राइब करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, तो वो एक्सपोजिटोरी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे का कॉम्बिनेशन. फिर आ गया क्रिटिकल ऐसे. क्रिटिकल ऐसे का जो मॉडल होता है वो कुछ इस तरह होता है कि आपने कोई भी पीस ऑफ राइटिंग, कोई भी रिसर्च पेपर लिया, आपने उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट किया, उसके फ्लॉज ढूंढे, उसकी अच्छाइयां ढूंढी, उसके पॉजिटिव ढूंढे, स्ट्रेंथ वीकनेस. आपने देखा होगा शॉर्ट एनालिसिस सुनते होंगे आप लोग, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो ये भी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है. इसके अलावा स्क्रीन पर नहीं लिखे हैं लेकिन मैं आपको दो ऐसे और बता देता हूँ. Essay of exemplification. Let me repeat. Essay of exemplification. Exemplifying essays. ऐसा ऐसे भी होता है जो कि एग्जाम्पल्स को डिस्क्राइब करता है. एक और काइंड होती है प्रोसेस ऐसे, इन विच यू राइट प्रोसेस. आप कोई भी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं. तो ये भी होते हैं खास तौर पे प्रोसेस राइटिंग होती है. अच्छा, अब ये सीन्स आप देख सकते हैं. आई एम गोइंग टू बी क्वाइट फॉर अ व्हाइल बट आई विल बी चेंजिंग screen after every 30 seconds.
देखिए इसमें डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन एट देयर वर्क प्लेस, जेंडर इक्वालिटी, इस तरह करके ऐसे ज़्यादा होता है। डिस्कर्सिव जो एनालाइज इट, एनालिटिकल, इसमें लिखा भी एक। अच्छा ये मॉडल बहुत अच्छा है, नीचे अगर जो आप नोटिस करेंगे, एक्शन, कॉज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन। एक्शन का मतलब आपका ओपिनियन, आपका आइडिया या जो प्रॉब्लम है वो। अच्छा इसमें लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल आर नीदर गुड और बैड, morality and ethics which is in euthanasia. Euthanasia क्या practice होती है? Euthanasia is usually the practice of mercy killing. Patients को out of mercy जो है kill कर देना. Action, reason, result and recommendation. Cause and effect ऐसे, energy crisis, problem of big city, cancer, expository, facts and truth, Xerox business system. एक्सपोजिटोरी ऐसे की ही दो काइंड होती है, एग्जाम्पलिफिकेशन ऐसे। अच्छा एग्जाम्पलीफाई ऐसे के अंदर पूरा ऐसे एक एग्जाम्पल पे फोकस करता है, जबकि एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऐसे है उसकी आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए छोटी सी एग्जाम्पल आती है, और एग्जाम्पलिफिकेशन ऐसे में पूरा ऐसे आता है। एंड द लास्ट इज क्रिटिकल ऐसे। Okay, thank you very much. Let me conclude. This is Muhammad Aslan Siddiqui, and particularly the lesson is this lesson is targeted for the functional English students. I hope that you have learned something from this, the series of these two lessons. The earlier one on Friday, and this one is today. The first part of my lesson dealt with how to construct essay, the knowledge of essay writing, the techniques, the mechanics. The second part dealt with types of essay and how you build ideas and how you inculcate those ideas. So this is going to be useful to you. आप लोगों के लिए यही होगा कि because you are going to have exams online, तो उसमें एक जो क्वेश्चन होगा वो यकीनन किसी ऐसे राइटिंग से रिलेटेड होगा। दो तरह के ऐसेज हो सकते हैं, आपको मैं केस स्टडी दूंगा, आपने फिर उस पर ऐसे लिखना है, या आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसे लिखना। So make sure that you work hard on it. I hope that you've enjoyed this lesson as well. Thank you so very much. Allah Hafiz.